I'm recording this. Shoaib sir, introduce yourself. Assalamu alaikum. I am Shoaib Rahman. As far as my qualification is concerned, I have done Ppsc in economics from BZU and MPhil in economics from Namal University Islamabad Multan campus. Now I am currently working as a teacher of economics in a private sector since last year. Okay, good. Shoaib, directly coming towards the interview related to economics, can you know about what is circular debt? Sorry, sir. I'm not asking about the figure of circular debt. I'm just asking about the terminology that what is circular debt in Pakistan economy. Have you ever heard Circular this? Circular debt basically is a debt of a different government sector or other sector. Because of this circular debt, there is a electricity shortfall. You can take the example that IPPs are the independent power producers, and Yes. central purchasing uh, power authority which purchase the electricity, Yes. but distribution companies sometimes they have lack of collections. That's why the payments to IPPs is shortage. Hmm. That's why it is called circular debt, Very the good. debt of institution or other institutions. Very good. This was I was expecting from you. Okay. Can you tell me any current or previous 2 years poverty eradication programs run by Pakistan government? पाकिस्तान में इस वक्त जो बेसिक पॉवर्टी एरेडिकेशन प्रोग्राम जो चल रहा है वो तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है. इसके अलावा जो मौजूदा गवर्नमेंट है इन्होंने एहसास प्रोग्राम जो शुरू किया है Okay. उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को सपोर्ट दी गई है. और जो है ये बेसिक प्रोग्राम पाकिस्तान में चल रहे हैं, एहसास प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसमें काफ़ी सारे लोगों को मजीद ऐड भी किया गया है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में. Okay. Good. Do you suggest any measure to improve tax to GDP ratio for Pakistan? टैक्स टू जीडीपी रेशो इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जो टैक्स नेट जो है उसमें इजाफा किया जाए. जैसे हमारे यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा मतलब फिगर्स आते हैं कि जो हमारी अंडरग्राउंड इकोनॉमी है, जिसे इलीगल इकोनॉमी कह सकते हैं आप, जैसे इंपोर्टेड सिगरेट है, उसके बारे में कहा जाता है कि उससे बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो सकती है. और पाकिस्तान में इस वक्त इंपोर्टेड सिगरेट जो है वो इलीगली जो है वो उसकी फ़रोख्त हो रही है. तो बेसिकली ये है कि हम जो अंडर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी है अगर हम उसको बढ़ाएं, ठीक है, तो हम जो है टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं. पाकिस्तान में पोटेंशियल टैक्स पेयर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो पोटेंशियल टैक्स पेयर्स हैं बट दे आर नॉट रजिस्टर्ड. सो टैक्स रजिस्ट्रेशन जो है उसको सबसे पहले बढ़ाना चाहिए. Okay, good. It's a question related to agriculture economics. A very simple question. Do you know about Rabi and Kharif crops? कौन सी होती हैं? आई एम नॉट श्योर. ये दो फसलें होती हैं, रबी एंड खरीफ क्रॉप्स. इनमें कौन तो सी उसमें क्रॉप्स होती हैं? मेरे ख्याल से आई थिंक सो गंदम और चावल वगैरह ये क्रॉप्स हैं. रबी की और खरीफ की शायद वो अपना जो है चना और दालें वगैरह, ये जो क्रॉप्स हैं. Okay. What are the measures of risk in economics? मेजर्स ऑफ रिस्क बेसिकली तो मेजर्स ऑफ रिस्क में जो है सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाती है, जिसे एवरेज वैल्यू कहते हैं. उससे भी रिस्क को जो है जो सेंटर वैल्यू पता चल जाती है, एवरेज रिस्क पता चल जाता है. और इसके अलावा जो रिस्क में डिफरेंशिएशन आती है, डेविएशन आती है, उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो एक मेजर है जो यूज किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन के जरिए से. Good. अच्छा. Do you know about the difference between Kaibor and Libor? Have you ever heard about these terminologies? Kaibor and Libor. काइब आई थिंक ये इंटर बैंक रेट्स हैं. काइबर रेट जो है वो कराची इंटर बैंक रेट है और लाइबर आई थिंक लाहौर इंटर बैंक रेट है. Or what is the theme of this? Why they are used and what is their basic जो है ना mechanism? Interbank में क्या होता है? Like Karachi interbank offer rate. What is all about? It is about exchange rate. No, sir. It is about interest. It is about interest rate. Okay. Interest rate. Interest rate. The bank rate at which the central bank gives loan to the commercial banks. The interest rate between the commercial banks. Okay. What is the excess capacity in economics?
excess capacity in economics. Excess capacity, if an economy is producing below the minimum point of long run average cost curve, it means the economy is working with excess capacity. Yes, optimal level आप कह सकते हैं, minimum level कह सकते हैं, the cost. Okay, done. Yes. Can you tell me about the Caldor-Hicks criteria of welfare economics? पब्लिक फाइनेंस में है ये टॉपिक, क्राइटेरिया. Yes, it's in microeconomics. It is in microeconomics, in welfare economics. Okay, no issue. Welfare economics. Yes, no issue at all. Do you know about the ratio of direct and indirect tax in the previous economic survey or recent any figure you know about कि direct और indirect taxes जो है ना वो total revenue में क्या उनकी ratio है, क्या contribution है? एग्जैक्ट फिगर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मैंने जब पढ़ा है कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो 30 to 40% उसका जो है रेशियो है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो 60% है. Anyhow, ठीक है, you are near about this. And the next question from you is, how rate of interest is determined under classical and Keynesian? Loanable fund theory, real interest theory, according to classical, supply of loanable funds and demand of loanable funds. And under The same Keynesian? schedule. This under Keynesian, the transaction, speculative demand theory, liquidity preference theory, you can say. Liquidity preference theory. Say money demand and money supply was presented by, like Keynes never disagree with the loanable fund theory, but he has basically focused on Given the concept of money demand and money supply. Okay. Classical basically focused on supply and saving. That's why their supply, saving and investment theory. So their theory is called real interest theory. Okay. Can you tell me that if the investment curve is interest, if the investment curve is interest, perfectly interest inelastic? Sorry sir, नुज़रत डिस्ट्रक्शन हो रही है. नुज़रत राशिद, आप माइक को ऑफ कर दें अपने. सर प्लीज रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन. Yes, I am telling you, if the LM curve is perfectly inelastic, what this situation represent? LM curve is perfectly inelastic. It means the LM curve is vertical. What is vertical LM schedule? It means that money demand is insensitive to interest rate. Vertical LM schedule. Money demand is insensitive to rate of interest. Okay, which school of thought supported or presented this idea of LM? School of thought. Which school of thought? Classical. Very good, very good. It is related to this. Okay, can you tell me, if total revenue is falling, what would be the elasticity of demand? Total revenue is falling. First of all, you have to explain total revenue is falling. Is either the price is falling or increasing? No, I am just total revenue curve is falling. Okay, it is negative total slope. Revenue If curve, total revenue curve is negative slope. Okay. Total revenue is falling. It means that elastic demand will be less than 1 because marginal revenue curve becomes negative. Very good. Good job. Anyhow, the next question from you. Do you have any idea related to Clark or Knight theory of profit? According to Clark and Knight theory of profit, that profit is a result of innovation. Okay. Then what is the work of Schumpeter is related for? Sorry, Schumpeter theory is according profit is a result of innovation. Okay. And Clark and Knight, according to Clark and Knight, because profit is a result of uncertainty, risk taken by the investor. Okay. Chale. One question from international economics. Do you know about Stolper-Smilson theorem? Stolper-Smilson theorem. Sorry sir, पढ़ा है लेकिन अभी रिवाइज नहीं किया हुआ. Okay. Then last question from you.
is, do you know about the Baumol contribution or Baumol model in managerial economics or in microeconomics? What is it all about? या चले मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा कि Baumol सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का थीम क्या है? थीम यही है सर कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बजाय हमें जो है वो जो पहली जो ओल्ड थ्योरी ट्रेडिशनल थ्योरी जो फर्म्स की है वो ये कहती है कि फर्म्स जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाती हैं। बोमल्स जो है वो ये सजेस्ट करता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है आज के दौर में जो फर्म्स का जो मॉडर्न बिहेवियर है दे विल गो फॉर सेल्स मैक्सिमाइजेशन रेदर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उसके लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स पेश किए थे। बेसिकली उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट बिल्ड किए थे कि बिकॉज ऑफ these रीजंस we have to go for the sales revenue maximization. Do you know any 1 2 3? आई थिंक जो से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जो कंडीशन है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, तो वो ये जो कंडीशंस है ये पूरी नहीं होती क्योंकि आप एग्जैक्टली मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एस्टिमेट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये थियोरेटिकली सारा ट्रू है लेकिन जो है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है। तो इसलिए जो कंडीशंस हैं वो फुली सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। तो Okay. दैट्स व्हाई हम जो है सेल्स मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाएंगे। Okay, the last question from you is, do you know about the minimum wage that is announced by the current government in the coming जो recent जो है economic survey of Pakistan है? Any idea about the minimum wage? 17 to 18,000। हाँ, यस, मिनिमम वेज। Okay, 70. Thank you, Shoaib sir. It was a good बहुत interview with शुक्रिया you सर, and best wishes for you. थैंक यू वेरी मच सर।